अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और एआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो देन यू कैन गेट अ फेलोशिप ऑफ 1 लाख रुपीज, मेंटोरिंग सपोर्ट एंड मच मोर. Hello everyone, I'm Aniket Kakade and welcome to yet another video. Today in this video we will be discussing about India AI Fellowship, a program under India AI Mission fully supported by Ministry of Electronics and Information Technology and Digital India. This fellowship is designed for UG, PG and PhD students who wants to work on real world AI projects. Now, what is India AI Mission? What is India AI Fellowship? इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, ऑल द डिटेल्स आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इंडिया एआई मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है which aims to create AI ecosystem in India. And under this India AI mission, there is a future skill program through which they wants to offer fellowship to the students who wants to work beyond academics and who wants to apply AI in agriculture, healthcare and other fields. Now let us talk about the eligibility criteria. India AI Fellowship undergraduate students, postgraduate students और PhD students के लिए. सो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसमें अप्लाई करना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक कैटेगरी के लिए. सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी. सो इफ़ यू आर अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट देन यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. इसका मतलब क्या, अपने फाइनल ईयर में हो और AI रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो. सेकेंड, यू मस्ट हैव कंप्लीट एटलीस्ट 3 मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्सेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल machine learning, natural language processing or computer vision. And at last, you must have overall score of 80% or higher in your last semester. Then only you can apply for this India AI Fellowship. Now let us discuss about the eligibility criteria for postgraduate student. First of all, you must be enrolled in an AI related postgraduate program. And secondly, you must be undertaking a thesis on AI related subjects. Now this is the eligibility criteria for the MTech students. Now at last let us talk about the eligibility criteria of PhD students. Now if you are a PhD student wants to apply for this fellowship then you must be a candidate specialized in AI, and secondly you should not be receiving any salaries or funds from other institute or other programs. Then only you can apply for India AI Fellowship program. So this is the eligibility criteria for UG, PG and PhD students. Now let us talk about the application process for this India AI Fellowship. इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और एक बेसिक फॉर्म आपको फिल करना है. सो लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दैट व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप. फर्स्ट वन इज नॉमिनेशन प्रोफॉर्मा, सेकंड अंडरटेकिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट गाइड, थर्ड एंडोर्समेंट बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फोर्थ ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, फिफ्थ गेट स्कोर फॉर MTech students, sixth a PAR ID, and at last a bank account check or a passbook details. All other details about these documents have been mentioned on the official website of India AI Mission. Now once you are done with the documents, next step is to fill up the form. You have to fill your personal details, project details like project title, description, the PPT or document or the abstract you have prepared for the project and other details. Now once you are done with these 2 steps, you have successfully applied for the India AI Fellowship. All the details about the application process has been mentioned on the official website of India AI Mission. Now at last let us talk about the benefit and the financial support you will be getting after selecting for this India AI Fellowship. Now for undergraduate students, they will be receiving 1 lakh rupees in 3 installments for their AI project. Second, for the postgraduate students, they will be receiving 2 lakh rupees in 4 installments in 2 years. And at last for the PhD students, they will receive the fund for their research. So this was all about India AI Fellowship. इस वीडियो में इंडिया AI मिशन के बारे में, फेलोशिप के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सभी स्टेप्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए. सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. For other details and for the application process, you can check the official website of the India AI Mission. I have mentioned the link in the description. If you are serious about AI and wants to learn about artificial intelligence, wants to work in the field of AI and wants to implement AI-driven solutions that could solve real-world problems, then you must participate in India AI Fellowship program. If you found this video helpful, then like this video, comment your questions in the comment section and share this video with your friends.
वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।